ठहरा हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी दोनों सड़ जाते हैं, और शायद इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह संदेश दिया कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। हाय, माय नेम इज डॉक्टर संजय गौतम. आई एम बेस्ड एट दिल्ली and I hold a PhD degree in counseling psychology. About my journey of DMIT, let me share with you that I'm a certified dermatographics analyst from BCL Brainchild Learning in 2011. I'm the founder and director of ICEBERG India, which was started on 1st of March 2011. So we have been in DMIT industry for more than 11 years by now. So you can say that we have invested more than 1 decade in DMIT industry. In last 11 years of journey, we have established more than 2,200 DMIT brands in 19 different countries like USA, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Indonesia, and many more. We are the inventor of 21 fingerprint patent-based DMIT software in year 2014. We are the founder of Architect DMIT software technology in year 2019. We are the inventor of touchless fingerprint scanning technology in year 2021. And we are also the inventor of dermatographics in medical disorder in 2022. We have some amazing institutional clients like DPS, GD Goenka International School, MIT School, Sharda University, and many such more. And we are also, in fact, rather, I'm the author of a wonderful book called Why Do DMIT Companies Fail in Year 2019. This was a brief about me. Now let me take you further. And let me also share with you that what are you going to learn at the end of this program. At the end of this program, you will be able to know the issue of scientific evidence and authenticity of DMIT. You will know that why are people not able to scale up their DMIT business. You will know that why do people fail in DMIT business and how to convert your DMIT business from physical presence to digital presence, how to kill competition in DMIT business, and how to create your monopoly in DMIT business. How to crack DMIT school is also one of the aspects that you will learn during this program. So before we proceed, I would like to share some of these amazing case studies with you, which will give a lot of insight to all of us. First of all, let's talk about a company called Ola, which was started in December 2010 by two gentlemen called Bhavish Agarwal and Ankit Bhatti at the age of 24 and 21. Now look at the age of these two young boys, 24 and 21. In today's world, at the age of 24 and 21, people don't even know that how are they going to lead their life in next 3 years or 5 years down the line. But these two boys started Ola Cab at the age of 24 and 21 in December 2010. And today, the net worth of Ola is 48,750 crore rupees. Zomato was started in July 2008 by Dipendra Goyal and Pankaj Chadda, again at the age of 22 and 20. And today, the net worth of Zomato is 41,872 crore rupees. Baiju, July 2011, started by Baiju Ravindran at the age of 31. And today, the net worth of Baiju is 1,71,187 crore. Let's take one more example from our own industry. So when I say our own industry, we are not talking about DMIT, but we are talking about a different company which is working in the field of career counseling. And the name is Mindler. Mindler was started in October 2016 by this gentleman called Prateek Bhargav. They are in the business of career counseling with the help of psychometric tests. So they do not have DMIT. They don't use DMIT. They use psychometric tests, a simple psychometric questionnaire, and with the help of pen paper, this test is to be performed by the participants. And the age group that they target is from 12 to 25 years of age. So very small age bracket between 12 to 25 years, and a traditional tool like psychometric. So with the help of psychometric test and for a very small age group between 12 to 25, this company started in October 2016, and just within five and a half years, this company has reached the net worth of 100 crore rupees. Now, question is, why are we not there in this list? We also started DMIT business 11 years back, and many of you have been in DMIT business for more than 5 years, 7 years, or maybe 10 years also. So why we are not there in this list? When I started searching the answer to this question, it's not 1, 2, 3. I came to know complete 12 reasons. So those 12 regions, I'm going to share with you very quickly. Let's have a look at those regions. Number one,
Scientific evidence of DMIT. So when we say DMIT, DMIT is a combination of two different things. One is dermatographics, another is multiple intelligence. So when we say DMIT, so that means finding multiple intelligence through dermatographics. So the question is कि dermatographics से multiple intelligence का पता चलता है, इस बात का क्या प्रूफ है? क्या इसके ऊपर कोई रिसर्च हुई है? अगर कोई रिसर्च हुई है तो वो रिसर्च कब हुई, किसने की, और क्या हमें उस रिसर्च पेपर की एक कॉपी मिल सकती है? एंड आइडियली वो रिसर्च 1983 के बाद होनी चाहिए, क्योंकि 1983 में ही डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस किए, और 1983 से पहले किसी को भी मल्टीपल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था। तो अगर डीएमआईटी साइंटिफिक है तो डीएमआईटी के ऊपर 1983 के बाद कोई रिसर्च पब्लिश होनी चाहिए। तो क्या ऐसी कोई रिसर्च अवेलेबल है? इन मोस्ट केसेस आंसर इज नो. So the very first reason is scientific evidence and authenticity of this concept. Second, Dr. Howard Gardner himself does not support DMIT. The father of multiple intelligence, Dr. Howard Gardner, is not in favor of DMIT. This you can easily find out on internet as well. Let me share the screenshot of of this screen, which is taken from internet. It says DMIT scam. Here you can see this letter, which was issued by Dr. Howard Gardner on September 20th, 2017. And this letter very clearly reads, "Thank you for your note. In brief, there is no evidence suggesting a connection between a person's fingerprint and their multiple intelligence. I do not endorse DMIT tests and have not been involved in their creation. I hope this is helpful. With best regards, Howard, Dr. Howard Gardner." His complete name, address, phone number, mail ID, everything. And this letter is very easily available on internet as well. So the father of multiple intelligence, Dr. Howard Gardner himself, does not support DMIT. So why should we accept it? Third, individual's credibility. You may be a graduate, postgraduate, or PhD in XYZ subject, but here the question is, what is your qualification in dermatographics? Have you done any degree, diploma, certification course in dermatographics? And if no, so that means you do not have any formal education in dermatographics. Next, copied and cheap DMIT software available in the market. Today, when you search DMIT software on internet, you get to know so many things. Some of those things I am sharing with you. DMIT software cost 5,000 rupees, 10,000 rupees. DMIT software and franchisee 5,000 rupees. Midbrain and DMIT franchisee for 5,000 rupees. So for 5,000, 10,000 rupees, there are people who are selling you complete DMIT software. तो जब 5-10 हजार रुपए में DMIT सॉफ्टवेयर ही मिल रहा है, तो फिर 5-10 हजार रुपए के इस सॉफ्टवेयर से आप अपने बिजनेस को कितना बड़ा कर सकते हैं? That itself is a big question. Next is no price uniformity. DMIT इंडस्ट्री में हर कोई एक अपना ही डांस कर रहा है. मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो एक DMIT रिपोर्ट को 15,000 रुपए में बेचते हैं, और मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जो एक DMIT रिपोर्ट 1,500 रुपए में बेचते हैं, 500 रुपए में बेचते हैं. तो एक ही DMIT रिपोर्ट में इतने सारे प्राइस के डिफरेंसेस हैं that people or the customer generally get confused. So there is no price uniformity in DMIT business. Physical presence. DMIT has been a business of physical presence. क्योंकि DMIT करने के लिए आपको फिंगरप्रिंट्स चाहिए, और फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए या तो आपको कस्टमर के पास जाना पड़ेगा या कस्टमर को आपके पास आना पड़ेगा. So in both the cases, physical presence is required. और जब जब किसी भी बिजनेस में फिजिकल प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तब तब उस बिजनेस को स्केल अप करना एक मुश्किल काम हो जाता है. So DMIT business demands physical presence. Next, no repeat business. DMIT is a one-time sale. एक कस्टमर ने जिसने आपसे DMIT रिपोर्ट कराई है, वो सेम कस्टमर आपसे कभी दोबारा DMIT रिपोर्ट कराने नहीं आएगा. So DMIT is one-time sale. So every time you have to hunt for a new customer. Next, small companies. All these companies which are working in the field of DMIT have been considered as a small player. तो कोई सूरत की एक कंपनी है तो सूरत के एक पर्टिकुलर एरिया में काम कर रही है, कोई नागपुर की कंपनी है तो नागपुर के एक पर्टिकुलर एरिया में काम कर रही है, कोई दिल्ली की कंपनी है तो दिल्ली के एक पर्टिकुलर एरिया में काम कर रही है. तो ऑल दीज कंपनीज दे आर कंसीडर्ड एज ए स्मॉल लोकल प्लेयर. None of these companies have been able to establish themselves as a national or an international DMIT company. So very small companies. Next, negativity about DMIT. Today, if you search, DMIT on Google, you get to know so many things, and some of them are not very pleasant. Let me share some of them with you. This is an online newspaper, the Telegraph Online. This is very popular newspaper, and it says, "Beware, parents beware of fingerprint test." It reads furthermore,
and does not sound very healthy or very positive. Doctors call DMIT fingerprint test medical palmistry. This is also not very pleasant or not in favor of DMIT. Several claims seems unscientific, blah, blah, blah. So there is a lot of negativity about DMIT on internet today. Another, IPS letter on DMIT. This is one of the most critical issue that people have faced in DMIT industry. Now, what is this IPS letter? Let me explain you. On 25th of September 2019, IPS, Indian Psychiatric Society, has issued this letter. This letter has 4 points. Let me read those 4 points very quickly for all of you. The headline or the heading of this letter says, position statement on dermatographics multiple intelligence test. Point number 1, the Indian Psychiatric Society, IPS, is the largest representative body of psychiatrists and mental health professionals in India, and it denounces dermatographics multiple intelligence test. 2, DMIT is not based on scientific evidence. 3, DMIT is not useful for intelligence testing, brain lobe function testing, and predicting the future behavior. 4, IPS urges parents and schools to stay away from such ill-founded practices. Signed by Dr. Vinay Kumar and Murugesh Vaibhav, Honorable General Secretary and President of Indian Psychiatric Society, respectively. So DMIT has been completely denounced and rejected by Indian Psychiatric Society. And when you search DMIT on Google, you will get to know, or you will be able to find this letter also on Google. What else? No business coaching or inadequate training. Let's suppose when you start this business, there are companies which will provide you DMIT software, scanner, right, or 2 or 3 days of training, and then that's all. 2 दिन का ट्रेनिंग, 3 दिन का ट्रेनिंग देने के बाद आपको छोड़ दिया जाता है, और आपके पास कोई भी किसी भी तरह का कोई बिजनेस कोचिंग नहीं है, किसी भी तरह की कोई हैंड होल्डिंग नहीं है. आपने 2 दिन का ट्रेनिंग लिया, वो भी कॉन्सेप्ट के ऊपर, फिंगरप्रिंट्स क्या होते हैं, कैसे स्कैन करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, इस तरह का ट्रेनिंग आपको दिया गया. किसी भी तरह की बिजनेस ट्रेनिंग आपके पास नहीं है, और 2 और 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद आपको छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद आप जानो और आपका काम जाने. किसी ने भी आज तक आपकी प्रॉपर हैंड होल्डिंग नहीं करी है, आपको प्रॉपर बिजनेस कोचिंग नहीं दी है. सो नोबडी टुक द रिस्पांसिबिलिटी टू हेल्प यू एस्टैब्लिश DMIT बिजनेस. और 2 दिन और 3 दिन की ट्रेनिंग में कभी भी कोई भी इंसान किसी सब्जेक्ट का मास्टर नहीं बन सकता. सो नो बिजनेस कोचिंग और inadequate training on DMIT. Next, lack of digital marketing. In today's world, digital marketing is a very, very crucial subject. Many people, they lack digital marketing in their DMIT business, and nobody has ever taught them that how to do digital marketing. Nobody has ever supported them that how to do digital marketing. So lack of digital marketing has also been one of the key reasons for not scaling up DMIT business or the failure of DMIT business. So these are complete 12 reasons which I see have been the crucial and critical in terms of growth of DMIT business all over India. Now, even if we talk about school scenario, let's suppose even if you ignore all these things, right? And if you approach a school, now in a school, let's suppose principal is ready and she says, okay, fine, it sounds good. And she's completely convinced. And then she asks you that for what rate, for how much do you sell this report for? You generally tell that I sell this DMIT report for 5,000 rupees in the market, but because it is your school, so I will give you at a very heavy discount rate. And after the negotiation, the price goes down to 2,000 rupees, let's suppose. Right? So 2,000 rupees. Now principal is convinced. Principal says, okay, fine. Let us do it for the primary section first. So when you talk about primary sections, so generally there are 7 classes in primary, which is nursery, prep, 1, 2, 3, 4, and 5. So total 7 classes. Each class will have minimum 4 sections, A, B, C, D. And in each section, you will find minimum 40 students. So on an average, 40 students in each section. So 7 into 4 into 40, that becomes 1120. So even if you round it off to 1,000 students, so it has become a contract of 1,000 students. Okay, 1,000 students multiplied by 2,000 rupees per child's report. So 1,000 into 2,000, that becomes 20 lakh rupees of project. Principal says, fine, send me your proposal. Then you go back to your office and then you prepare a beautiful proposal and then you send it to the principal. Principal receives this proposal and then she shares this proposal with her secretary and says, my dear secretary, this is a proposal from so-and-so person for DMIT, right? Can you just do the due diligence on this proposal? Can you just review it? That secretary goes to Google and there she types DMIT. And when she types DMIT, तो DMIT टाइप करते ही उसको गूगल पर DMIT कंपनीज की एक पूरी बाढ़ सी आती दिखाई दे जाती है.
उसको 1 2 3 नहीं बल्कि कम से कम 200 से 300 DMIT कंपनीज गूगल पर दिखाई देती है। तो वो शुरू की 2-3 कंपनीज को फोन करती है ऐसी रैंडम चेक के लिए और बोलती है कि सर मुझे अपने स्कूल में DMIT कराना है, अपने करीब हमारे करीब 1000 बच्चों का DMIT टेस्ट कराना है, तो आप बताइए व्हाट डू यू सजेस्ट। तो कंपनी कहती है ओके DMIT टेस्ट कराना है 1000 बच्चों का, वेरी गुड। तो एक काम करते हैं मैडम, हम आपको पूरा का पूरा DMIT सॉफ्टवेयर बना के दे देते हैं और उस सॉफ्टवेयर से आप खुद DMIT रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो और वो भी आप ही के ब्रांडिंग में। और नॉट ओनली दिस, हम आपको आपके स्कूल में ही आके आपके कुछ टीचर्स को, यू आइडेंटिफाई 10-15 टीचर्स फ्रॉम योर स्कूल, और हम आपके उन 10-15 टीचर्स को आके हमारे प्रोफेशनल ट्रेनर्स DMIT पे आपके टीचर्स को ट्रेन करेंगे। 2 और 3 दिन की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी और उस ट्रेनिंग में आपको सब कुछ सिखाया जाएगा कि फिंगरप्रिंट्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, कैसे स्कैन करने हैं, कैसे एनालाइज करने हैं, कैसे रिपोर्ट बनानी है, कैसे काउंसलिंग करनी है, कैसे पेरेंट्स को पिच करना है। तो सारी की सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी, आपको DMIT सॉफ्टवेयर दिया जाएगा और उसके बाद आप एकदम इंडिपेंडेंट हो और आप खुद अपने ही स्कूल में DMIT रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो और ये सारी की सारी रिपोर्ट आपके ब्रांड पर ही आएंगी। आपको फिंगरप्रिंट भेजने की भी जरूरत नहीं है, यू आर एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट। ओके फाइन, साउंड्स गुड। तो ठीक है, तो ये DMIT सॉफ्टवेयर, इससे मैं कितनी रिपोर्ट जनरेट कर सकती हूँ मैडम? आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। ओ अनलिमिटेड, दैट्स वंडरफुल। तो कितने का है ये सॉफ्टवेयर? आंसर इज 20,000 रुपीज। ओके 20,000, फाइन, प्लीज सेंड मी द प्रपोजल। Proposal is sent to the principal and then now principal has two different proposal। एक तरफ आपका प्रपोजल है जिसमें आपने 20 लाख रुपए कोट किया है 1000 बच्चों की DMIT रिपोर्ट जनरेट करने के लिए, और दूसरी तरफ एक दूसरी कंपनी है जिसने पूरा का पूरा DMIT सॉफ्टवेयर, स्कैनर, ट्रेनिंग, सपोर्ट सब कुछ स्कूल को ही दे दिया, स्कूल के ब्रांड पे, और वो भी सिर्फ 20,000 रुपए में। सो नाउ इट हैज बिकम अ कॉम्पिटिशन ऑफ 20 लाख वर्सेस 20,000। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड who will win। Chances are obviously that the company which is providing the complete software will actually win, क्योंकि यहाँ पे प्राइस डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा है। 20 लाख और 20,000 में प्राइस डिफरेंस बहुत ज्यादा है। हो सकता है आपकी क्वालिटी अच्छी हो, आपकी काउंसलिंग अच्छी हो, बट प्लीज अंडरस्टैंड इंडिया इज अ वेरी वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट। यहाँ पे क्वालिटी के नाम पे आदमी 20,000 के 21,000, 22,000, 25,000 तो दे सकता है, लेकिन 20,000 के 20 लाख नहीं दे सकता, बिकॉज द प्राइस डिफरेंस इज टू बिग। So in most cases, you actually end up losing the opportunity. Now what happened? You went to the school और आप यहाँ से फॉलो अप कर रहे हैं कि मैडम what happened, मैंने वो 20 लाख रुपए का प्रपोजल आपको भेजा था, उसका क्या हुआ? मैडम कहती है या इट इज अंडर कंसिडरेशन, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली जाएगी। नाउ ये प्रिंसिपल मैनेजमेंट के सामने जाती है और मैनेजमेंट को बोलती है कि सर ये देखिए मेरे पास एक 20 लाख रुपए का प्रपोजल आया था हमारे स्कूल के सिर्फ आधे बच्चों का DMIT स्कैन करने के लिए, DMIT रिपोर्ट जनरेट करने के लिए, और अगर पूरे बच्चों का करना होता तो 40 लाख रुपए लगते, और मैंने खुद अपने इंटेलिजेंस से मार्केट सर्वे करके, रिसर्च करके कई कंपनीज का पता लगाया जो DMIT सॉफ्टवेयर ही दे रही है और वो भी सिर्फ 20,000 रुपए में। तो आप देख सकते हैं सर, मैंने मैनेजमेंट के 39.8 लाख रुपीस की सेविंग कर दी, क्योंकि अल्टीमेटली प्रिंसिपल भी तो एम्प्लॉई है, उसे भी तो प्रमोशन चाहिए, उसे भी तो ग्रोथ चाहिए, उसे भी तो बोनस चाहिए, उसे भी तो अप्रिशिएशन चाहिए। तो 20 लाख रुपए का प्रपोजल गायब हो जाएगा और DMIT सॉफ्टवेयर स्कूल खुद खरीद लेगा और खुद बैठ के वो बच्चों की DMIT रिपोर्ट कराता रहेगा। इसी वजह से आज हमारे DMIT इंडस्ट्री में बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारी यूनिवर्सिटी जैसे कस्टमर है हमारे, जिन्होंने पूरा का पूरा DMIT सॉफ्टवेयर ही लिया और उन्होंने उस सॉफ्टवेयर को अपने स्कूल और कॉलेज में अप्लाई किया। तो स्कूल सिनेरियो विल बी समथिंग लाइक दिस। बट एज फार एज द पोटेंशियल्स कंसर्न, अगर हम DMIT बिजनेस में DMIT पोटेंशियल की बात करें तो लेट मी टेल यू द पोटेंशियल इज ह्यूज। अगर हम इंडिया में सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें सो 31.8 करोड़ स्टूडेंट्स आर देयर इन इंडिया अलोन। उसके बाद then there is a corporate segment and there is a matrimonial segment as well। तो यदि इन सारे सेगमेंट्स को ऐड कर ले so this will cross more than 50 to 60 करोड़। तो 50 से 60 करोड़ पोटेंशियल कस्टमर DMIT इंडस्ट्री में हैं। क्वेश्चन इज इस पोटेंशियल को यूटिलाइज कैसे करें? $1 मिलियन क्वेश्चन। तो मेरे माइंड में कुछ सवाल आए कि क्या हम कुछ जादू कर सकते हैं, क्या हम कुछ डिफरेंट कर सकते हैं, क्या हम कैन वी एलिमिनेट द अनहेल्दी कंपटीशन फ्रॉम DMIT इंडस्ट्री। तो जितने भी लोग 10,000, 5,000, 20,000 रुपए DMIT सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, क्या इनको इंडस्ट्री से साफ कर सकते हैं? कैन वी एलिमिनेट देम कंप्लीटली? कैन वी क्रिएट आवर मोनोपोली इन DMIT बिजनेस?
or can we have our business presence at multiple location, कि कोई हमें एक छोटा सा प्लेयर ना समझ के एक नेशनल प्लेयर के रूप में कंसीडर करे, और क्या we can also get the repeat business from the same customer, कि एक बार DMIT नहीं वो बल्कि 2 बार 3 बार 4 बार हमसे DMIT रिपोर्ट करवाए, और can we also change DMIT business from physical presence to digital presence. So these some of the million dollar questions that came in my mind, और जब मैंने इन सारे सवालों का जवाब ढूंढना शुरू किया तो lot of research, lot of homework, lot of brainstorming के बाद आंसर मिला, yes we can do that, तथास्तु. Now let me tell you, I'm giving a very big tathastu to all of you, because I'm talking about eliminating the unhealthy competition from the market. I'm talking about creating monopoly in DMIT business. I'm talking about creating the multiple locations business presence of yours. I'm talking about getting the repeat business in DMIT, and I'm also talking about converting your business from physical presence to digital presence. All these promises are actually big, but still my answer remains same. Yes, we can do that. But the again billion-dollar question is how to do that. So to find out the answer, stay tuned with us, and in the next we will share that how to actually create all these things. Thank you very much.